हे एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लेट्स लीड। ये वाली जो हमारी प्लेलिस्ट होगी दैट विल बी बेस्ड ऑन सर्टेन टॉपिक्स विच आर समटाइम्स अ बिट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड, एंड वो टॉपिक्स कैन बी फ्रॉम पाइथन और even probably certain topics outside Python. All right. We'll start off by Python decorators, which are most of the time a bit confusing to understand, but definitely is a very powerful syntax or way of writing code in Python. All right. So before starting with decorators, I would like to talk about a bit of other uh, topics which will help us to understand decorators much more in detail. So the first thing to talk about is higher order functions. Higher order functions. Okay. So what I mean by higher order functions, or what do we mean by higher order functions in Python? All right. Basically, let's say there is a function. I write a function. मैंने एक function लिखा in Python. Let's say sum. All right. Generally, what we do is we pass parameters or values, I would say, to these functions. Let's say a and b, and in return, I pass any functionality which I need to do with these two objects. Let's say a plus b. All right. Remove this bracket. All right. Now, what if a function takes? क्या होगा अगर एक function takes another? Let's say a function 1 takes another function 2 as its parameter. Is this possible in Python? Yes, it is. So this type of syntax, it is possible. एक function दूसरा function as a parameter consume कर सकता है. All right, and this is known as a higher order function. So basically, it's a very common pattern in Python that enables us to write more expressive and powerful code. All right. Also, let's say, let me write a function. Let me write a function quickly. Let's say def loud. All right, which takes another function as its parameter. And inside this loud, I have a wrapper function. All right. Inside this, what I do is I return whatever is passed in my function dot upper, and I append. मैं उसको append कर रहा हूँ किसके साथ? Let's say exclamation marks के साथ. All right. And outside this wrapper function, I return what? The wrapper. ठीक है, तो एक loud function है. Okay, अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, it returns me a wrapper. What is a wrapper? Wrapper is an inner function जो कि खुद से क्या रिटर्न कर रहा है? जो भी वैल्यू पास होगी इस फंक्शन में, ओके, उसको कैपिटलाइज करके और एक्सक्लेमेशन मार्क ऐड करके इट विल रिटर्न मी. ऑल राइट. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन. ओके. सो बेसिकली जो ये रैपर है मेरा, ये लाई कर रहा है किसके अंदर? लाउड के अंदर. एंड इफ आई वांट टू लेट्स से एक्सेस रैपर आउटसाइड माय लाउड फंक्शन, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इसका स्कोप विद इन दिस फंक्शन ही है. ऑल राइट. So one of the reason basically is that one function use another function as their argument is to enable code reusability. All right, this is a kind of a higher order function. So ये promote करता है क्या? Code reusability and abstraction. If you observe carefully, मैंने इस function के अंदर wrapper function को abstract कर दिया. It's only accessible within the wrapper function. ठीक है? And we can pass them around the inner functions. We can pass them around as an argument. All right. Up, let's say I run this. Okay. And now what I can do is, let's say I create another function, greet. Okay. And return, let's say, hello there. ठीक है. अब मैं क्या कर सकता हूँ? I can take this loud function. ठीक है, एंड आई कैन से लाउड, लेट्स से ग्रीट. मैं इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ
and what does this do is I'll take the loud function, I'll pass greet inside it. ठीक है, अब मैं इसको अगर रन कर देता हूँ और फिर अगर मैं loud greet को रन करूँ, I invoke it, तो अब आप देखोगे हेलो देयर विथ एक्सक्लेमेशन मार्क. सो बेसिकली मैंने एक ग्रीट फंक्शन क्रिएट किया जो कि रिटर्न कर रहा है मुझे एक स्ट्रिंग. ठीक है, अब इस फंक्शन को मैंने पास किया लाउड फंक्शन के अंदर, विच टेक्स अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, और वो फंक्शन मेरे इनसाइड का स्कोप का जो रैपर फंक्शन है उसके अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है. क्या कर रहा है वो, उसको अपर कर रहा है, मतलब कैपिटलाइज कर रहा है, और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ इट इज रिटर्निंग मी. एंड इन दी एंड मैं रैपर फंक्शन का जो रेफरेंस है आई एम returning it as the return value of loud function. और जब मैंने उस रेफरेंस को यहाँ पे कॉल किया लाउड ग्रीड के अंदर, बेसिकली ये रेफरेंस आ जाएगा. जैसे ही मैंने इसको कॉल किया आई गेट दिस रिजल्ट बिकॉज यहाँ से ये रिटर्न हो रहा था. ऑलराइट, सो दिस इज a type of or I would say this is a kind of higher order function. ठीक है, इसे हम कहेंगे higher order function. Now the second topic we need to talk about is what are first class functions. Okay, what are first class functions? All right, first class function हमारे क्या होते हैं? All right, so basically in Python any function, I would say any function is a first class citizen. एक first class citizen होता है वो. Yeah, that means it has all the liberty inside Python. All right, or so basically the idea behind first class function is they are treated as any other object. एक function को if we are treating it as any other object, that is a first class function. All right, ठीक है. So let me take an example. अगर मैं let's say I create a couple of functions. Def, let's say loud greeting name. It takes a name and what it does is return f string में create करता हूँ hello name dot upper. ठीक है, और right, और इसमें I append what I append is, ठीक है, ये loud greeting हो गई मेरी. Similarly, let me create another function. Let's say we create this quiet greeting. Okay. Simple, इसमें hello name पास कर दिया, इसको append नहीं किया. ठीक, और in the end I run this as well. In the end simple एक greet function. Alright, simply greet function. Alright, it takes name and a greeting function. ठीक है, और end में क्या रिटर्न करेगा? रिटर्न greeting और name. ठीक है, जो भी हम इसमें पास करेंगे. अब आप देखोगे तो greet बेसिकली क्या कर रहा है? It takes two arguments. एक तो नेम जो कि स्ट्रिंग वैल्यू होगी और एक ग्रीटिंग फंक्शन लेगा यहाँ पे. तो इफ आई कॉल दिस लाइक दिस ग्रीट नेम, मैंने लेट्स से इसमें पास कर दिया सचिन. ठीक है, और एक फंक्शन मैंने इसमें पास कर दिया, सॉरी एक फंक्शन लेट्स से ग्राउंड लाउड ग्रीट. Okay, if I run this now, it is greet. If I run this now, you will get hello Sachin. So basically ये string और ये loud greeting function as an argument मैंने इसमें पास किया, and it automatically takes that function, passes the a string argument to that function, और वो basically upper करके नाम को it is returning back. Similarly, if I want, I can pass another function, let's say quiet greeting. ठीक है, so this is about first class what we call as first class functions within Python. Now the last thing before we start with probably decorators is I need to talk about
a concept of closures in Python. All right, the concept of closures in Python. So, what are closures in Python? Closure is a very essential concept in Python and a powerful tool in programming. All right. Um, for example, let me write a function. First, let's say def. It's an outer function which takes x and as an argument. एक x argument लेता है मेरा outer function और एक def inner function है, ठीक है, जो कि मेरा y पैरामीटर लेता है, ठीक है, और इन द एंड रिटर्न व्हाट इट डज इज रिटर्न x प्लस y, ठीक है, और फिर मैं इसके बाहर व्हाट आई डू इज रिटर्न इनर, ठीक है. I run this function. Now, so basically what are closures? I'll talk, इसके reference में भी मैं बात करूंगा, but let's talk a bit about the theory behind closures. So, closures are nothing but it's a way to retain or remember values from a particular scope even after that scope has exited or returned. So basically let's say मेरे को अपने scope में से कोई value को retain करना है या remember करना है to use forward, then I can use closures. Okay, at its core basically a closure in Python is a function object that has access to variable from past scope. Okay, we'll understand it. So even though आप यहाँ पे देखोगे, let me execute this. So what I can do is I can create an object. Let's say closure object मैंने create किया is equal to, मैं outer को call कर रहा हूँ and इसमें मैंने pass कर दिया 10, ठीक है. If I run this, अब मैं क्या करता हूं, अगर इस क्लोजर में मैं लेट्स से 20 पास कर रहा हूं, सॉरी क्लोजर में आई पास 20, ऑलराइट, एंड इफ आई रन दिस नाउ इट विल रिटर्न मी 30. सो आप देखोगे इवन दो द इनर फंक्शन सिग्नेचर एक्सपेक्ट्स अ सिंगल पैरामीटर, ये सिंगल पैरामीटर ही एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है. द इनर फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक, जो इसकी लॉजिक है, इट एक्सपेक्ट्स 2 पैरामीटर्स. सो बेसिकली सिंस इनर फंक्शन आउटर फंक्शन के स्कोप में है, इसलिए जो भी हम यहाँ पास कर रहे हैं वो यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं, ठीक है. बट this is the main essence behind closure. We could then initialize our outer function with a value for x. Let's say मैंने outer function को एक x वैल्यू से initialize कर दिया. अब मैं उस outer function के object में दूसरी वैल्यू पास करके I can get the results, ठीक है. वो वैल्यू को रिटेन करता है, जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें मेरी 10 वैल्यू रिटेन होगी. सो नेक्स्ट टाइम मैं जब भी इनर नेक्स्ट वेरिएबल पास करूंगा इसमें, इट विल ऑटोमेटिकली बी असाइन टू y, और x मेरा इसने ऑलरेडी 10 रिमेंबर कर रखा था. सो 10 into 20, सॉरी इट इज x plus y, so 10 plus 20 it will return me 30. ओके, सो बेसिकली हमारा क्लोजर यहाँ पे क्या कर रहा है, इसने एक पैरामीटर तो ले लिया, अब ये क्लोजर हमारा पॉइंट कर रहा है एक इनर फंक्शन पे जो कि हमारा एक पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है. ऑलराइट, सो बेसिकली व्हाई डज दिस वर्क, ये वर्क क्यों कर रहा है. ओके, इवन दो द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड executing, the closure still remembers the value of x basically, right? So when we invoke closure and pass some argument, it is same, basically calling inner function with argument that while holding the x value. So although मैंने यहाँ पे closure object create कर लिया with one argument, so अगली बार जब भी मैं closure object को call करूंगा with one argument, it is same as calling the inner function with these 2 arguments 10 and 20. Okay, so this is the concept of closure. Closure is, let's say if you want to hold a value or remember a value from prior scope into the new scope, the inner scope, so closure is one way to do this. Okay, so let's move ahead. Let's talk a basic intro to decorators. So here let's say basic intro to decorators. All right, now what are decorators, like जिसकी वजह से हमने ये क्लास शुरू की थी. what are decorators? decorators क्या हैं, ठीक है. So by definition, a decorator in Python is a special kind of function that either modifies another function, or extends it without explicitly changing its source code.
changing source code. ठीक है. So basically if I want to modify another function, okay, या फिर उसकी functionality को मुझे extend करना है without actually changing anything in the source code, I can use decorators. Okay, decorator provide a simple syntax or for changing rather for calling higher order function in order to modify the other function behavior. So basically काम हम वही कर रहे हैं, but it lets me do it with a better syntax. What I mean by that is, let's say def walk. All right. Let's say return let's walk. ठीक है. कॉपी पेस्ट करता हूँ इसी को. Let's say run. Right. और यहाँ पे है. Let's say sprint. Let's run. Let's sprint. ठीक है. अब मैंने क्या किया? Similar to what I did here, let me create another function which takes another function as an argument. So def, let's say drink water. ठीक है. Athlete. Def wrapper. What it does is print drinking water. ठीक है. And what it will do is return athlete. फिर end में return wrapper. So I created a function doing 3 different functions. Basically पहला walk, run और sprint. और फिर मैंने एक function create किया drink water which takes another function athlete, and inside the wrapper function it prints drink water and executes this athlete function. ठीक है. अब if I call let me call walk simply. If I do this, I'll get let's walk. अब मैं क्या कर सकता हूँ? Let me change this behavior a bit. Decorator को execute करने का क्या syntax होता है? We use @ and on top of this we do whatever added functionality we want to do as a function. So मैं यहाँ पे क्या करूँगा? drink underscore water को कॉल करूँगा. Alright. और इसके बाद जब मैं walk को दोबारा कॉल करूँगा तो you'll observe something. First drinking water print हुआ है, then let's walk print हुआ है. Why did this happen? So doing this is similar to doing this. So if I do this, let's say drinking water, drink water कॉल कर रहा हूँ और इसके अंदर I pass this function and I run this. So basically, so drinking water दोबारा पहले से एक बार हो चुका था इसलिए दोबारा it's doing. So I'm calling this function. So doing this and doing this is the same thing. So ये बस एक convenient decorator is a convenient way to modify basically एक function का behavior without actually calling a higher order function, creating an object and something like that. Okay, so what I can do is, let's say यही की मैं बात करता हूँ कि drinking water, what I can do is I can create an object is equal to drink water, for example obj is equal to drink water, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया for example let's say इस time I pass run. ठीक है. मैं जब इसको रन कर दूंगा, अब मैं जब भी इस ऑब्जेक्ट को कॉल करूंगा तो it will first execute. So doing this or doing this, it's the same and exact same thing. All right. बस ये decorator format में लिखा है मैंने, and here I'm creating an object and then executing it. Okay. So it's both the same thing. ठीक है.
अभी इफ यू रिमेम्बर हमने बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैं क्लोजर की बात करूं अगर, जहां पे हमने यहाँ क्लोजर की बात की थी, ऑलराइट, आप कह सकते हो कि give me an example, where I can use closures. So let's say इसी फंक्शन को I do, ठीक है, लेकिन इस टाइम I make it x into y, ऑलराइट, लेट मी कट आउट दिस, ठीक है। मैंने क्या किया, एक एक दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, टाइम्स, लेट्स से टाइम्स 2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू आउटर, और इसमें मैंने पास कर दिया 2, और इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग माय फंक्शन एवरी टाइम, लेट्स से टाइम्स 3 कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, जब भी मैं चाहूँ टाइम्स 2 को कॉल करूंगा, इसमें जो भी नंबर पास करूंगा, लेट्स से 20 टाइम्स 2 इज 40, इट विल रिटर्न मी 40। अगर मेरे को टाइम्स 3 करना है, तो टाइम्स 3 कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आई रिटर्न, इट विल रिटर्न मी 60। सो दिस इज अ वे बेसिकली क्लोजर को यूज करने का। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डेकोरेटर्स, alright, basic intro to decorators. So this was a basic intro to decorators. I'll have another episode on the approach to decorators इसके बाद, where we talk about how to decorate functions, with parameters, and how can we preserve the state of a decorated function, or how we can use decorators with different arguments. तो ये सब जो थोड़ा सा एडवांस लेवल है डेकोरेटर्स का, I'll talk in the next episode. Let's limit this to this only right now, till this the basic intro to decorators only. um, I'll be back with another episode. Thank you so much.